कहते हैं हर सफर में एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जहां रोड डिसाइड करता है कि आया आप आगे बढ़ेंगे या नहीं। और हमारे साथ भी कुछ यही हुआ, लेकिन ये सफर यहीं नहीं रुकने वाला। Chip seal, so you get half tire life up here. Yeah, that's true. असल सफर तब शुरू होता है जब आप टूट जाते हैं जो टायर मुझे चाहिए था वो इनके पास है नहीं रिलीज के, और फिर खुद को वापसी जोड़ लेते हो। जब हर पानी का टर्न आपके जज्बात को मजबूत करता है, जब हर मुश्किल आपको बताती है कि आप सही रास्ते पर हो। Time to put this tire on. ये सिर्फ अलास्का से पेंटागोनिया का सफर नहीं है, ये उन जगहों की तलाश है जो दुनिया शायद भूल गई है। उन नज़ारों की कहानी है जो दिखाई नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं। क्योंकि जब मुश्किल रास्ते आपको गिराते हैं तो आपके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वहीं बैठ जाओ या फिर उठकर दुनिया को दिखाओ कि असल राइड होती क्या है। क्या खूब कहा है मिर्जा गालिब ने, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो चलें मस्तानी को दोबारा तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। अब जो है हम कैंप साइट से निकल के जा रहे हैं बाइक को लेके यामाहा की डीलरशिप की तरफ। तो उधर पहुंचते हैं तो आपको दिखाते हैं, तो लेट्स गो। These are the folks that have been helping me throughout the way. I mean, I cannot be any more grateful. I mean, I have no word. The way things have worked out is just incredible. So let's get to the dealership. We'll show you that and tell you the cost. I think every bike has, depending on the size of the tire, that's where the cost comes in. Right. Because the bike is big, the tires are bigger, so the cost is a bit higher. You got the best bike, frankly speaking. Light like a feather. Yeah, it is light like a feather. Well, yesterday I rode the other bike, then I rode your Honda. I was like, oh my God, I'm getting a taste of both of the world. Yeah. Did you ride the Africa Twin? No, I didn't. Okay. I didn't ride the Africa Twin. अच्छा जी, पहुंच चुके हैं यामाहा की डीलरशिप की तरफ। हमें जो है एक बंदा है उसको देखना है जिसका नाम शेन है। So let's find him and let's get things fixed. अच्छा जी, बंदा मिल गया, वो हमें दिखाएगा कि where I need to park the car, bike. So right over there. Okay. Just prefer to not you get run over by locals. Okay. And you say you had a I've got a few different ones. Do you want to take a look first before Sure, you? sure. Okay, so our front tire is 120 70 19 Okay. and the rear is 170 60 17. Okay, I should have a matching set of those. I'll make sure first before you take the rear tire off. Okay. But I'll go double check and make Double sure. check and and then let's we'll proceed. Yeah. Awesome. And you have that little lift thingy, right? What's that for? Scissor lift? Yeah, Yeah. we have a couple right in the foyer there. Okay, beautiful. Awesome. Beautiful. Thank you. All right. And nice pavement. Our pavement is chip seal, so you get half tire life up here. Yeah, that's true. So, these are the one that you're recommending Trail Max to go with. Absolutely. They're excellent wearing tire, as well as they're good for on and off road. Okay, cool. Yeah. All right, let's wrap them. Let's do that. इस ट्रेलर में हमने इसको पैक करा था. Now we're gonna untie and just get it down from here and take it right over there. Okay, step down. All right. Is the front tire coming down there? Yeah. Let's roll it down. Roll this big baby down. Yeah! इतने वो मेक श्योर कर रहा है, हम ज़रा अपनी टायर के लिए चीज़ें जो हैं वो लाइन अप कर लें और उसको उतारने की तैयारी कर लेते हैं। Don't have a 120 for the front, but I do have a 110. So it's only 10 millimeters narrower. Okay. It should be no problem. No problem? No. So, but it takes 20 though. It usually takes a 120. Okay. Now, if you had a bunch of gear up here and stuff, or if there was two of you on there, Yeah. that'd be a little bit more of a worry. But with you being just by yourself and heading down south, where Yeah. there's more shops and stuff, I feel comfortable putting the 120 on there and having you get home.
You think this will ride me all the way south to Oh, yeah. this tire? Oh, this tire? Yeah. Since you're going that way, Yeah. I'm more comfortable saying yes. Okay. But you'll have to change that sooner than later. Yeah. Okay. So let's do the back tire then. Okay. Let's very do the good. back tire. Then what I'll do is, because from here all the way down to the States, I don't think there's any off-roading tracks. Not really, unless you're going into Alberta. I will not be going into Okay. Alberta. It'll be more mainly BC. Okay. So yeah, so if you're in BC, unless you're going on like fire roads or something like that, which Yeah. is way off, Yeah. you're probably going to be on pavement the whole way. Okay. But so- I would think that by the time you get to Vancouver or Seattle, Yeah. you'll probably need to change that front tire. Okay. Yeah. So let's knock out the back then. Let's Very do good. that. You're Sounds the like a man. plan. This is a guy. If you're coming down here into Whitehorse, Yukon Yamaha, right? That's right, Yukon Yamaha is a place to come, regardless of no matter what bike you have. Get your tires out here, fellas. Right on. All right, there we go. This is done. I realized what we're missing from here that fall. That guard, the mud guard, is not there. Yeah. There we go. That's it. अच्छा जी टायर हमने उतार लिया है तो अब सोच ये रहा हूँ फ्रंट जो है हम स्टेट्स में ही जाके करवाएंगे बैक करवा लेते हैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ फिर भी कॉस्ट क्या है ताकि उस हिसाब से भी हो जाए बट आई थिंक बैक ही करवा लेते हैं क्योंकि बैक इज़ द वन दैट्स डैमेजिंग फ्रंट फिर भी फाइन है एंड यू नीड माय ड्राइवर लाइसेंस राइट No, that's good. I got your name. I got your phone number. That's all I need. I'll get you to pay after it's done. Yeah, I'm gonna need a couple other things too. Yeah, no worries. That's all I need from you right now. Yeah. And then as soon as he's done, like he's spinning it right now. So. Okay, so you're talking about maybe next 10, 15 minutes If max. that. Yeah, Yeah. about 5 minutes. Yeah. Okay, Awesome. cool. You guys are the best. All right, हमारा टायर जो है वो रेडी हो चुका है. Let me show you the tire. Here, हमारा टायर जो है वो रेडी हो चुका है और अब जो है इसको वापसी लगाते हैं. Time to put this tire on. There we go. अगर ये आपको बेसिक काम नहीं आता ना, you're in bigger trouble. अब मेरा इंडिकेटर का था वो मैंने फिक्स कर दिया, रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ. I fixed it already. Okay जी, ये हो गया हमारा टायर. We're good. और मिट्टी का मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोजअप में कि जो इसके ऊपर से उतरती है वो कैसी होती है ड्राई होने के बाद. ये ऐसा लग रहा है कि कोई वुड के पीसेस है मगर नहीं, ये मिट्टी है. दिस इज़ डर्ट कि वो जो वंस से ड्राइज अप ये इतनी हार्ड होके क्ले की तरह बन जाती है पूरी. कंप्लीट मिट्टी है और दिखने में ऐसी है कि जैसे डर्ट अपना वुड. अब जो कि हमारा टायर लग चुका है, we're back on the road, we're good to go. अल्हम्दुलिल्लाह. फ्रंट टायर को यार अभी भी मैं लीन हो रहा हूँ कि आई शुड वेट टिल आई गेट लोअर 48 या इधर लगा लूँ. लोअर 48 तक चलता है तो वाई नॉट, वहाँ पे लगा लेंगे. It will give us quite a bit of mileage, so let's have fun. This is the new tire right here. इस बार हमने दूसरा टायर लगाया. जो टायर मुझे चाहिए था वो इनके पास है नहीं Pirellis के, तो Trail Max के टायर मैंने लगाए हैं and hopefully it'll be good. All right, Shane, tell me my damage, brother. Your damage today. Oh, you got to put the tire on there too, I guess. Regularly, it's going to be $495. So I'm going to take that down for you a little bit. These are more expensive than the Michelin. Well, yeah, it seems to be that every time I turn around, the price on these tires keeps going up. $516.94. Good. You're missing the holes. All right, we got it for $517 basically. Yeah. The tire cost was roughly $421 after discount and stuff, so not bad. Not bad. So let's roll out. Better than walking home. Yeah, I wasn't planning on walking home. I would have flied if needed. Right on. Thank you.
चले जी, $517 की जो है यहाँ पे हमें टायर की जो कॉस्ट है वो हमें पड़ी है, वो हमने चेंज करवाई। और सिमिलरली इतनी ही हमें पड़ी थी जब हम वहाँ पर गए थे फेयरबैंक्स, तो दैट इज़ अ कॉस्ट। नाउ लेट्स रोल। अब जो है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, हमने टायर का जो इशू था वो हमें सॉल्व करवा लिया। अब हमें हमारे ड्रोन के रिमोट का करना है, तो उसके लिए इन टाउन जाना पड़ेगा, बेस्ट बाय की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि होपफुली जो रिमोट है वो हमें मिल जाए। इफ़ नॉट देन दैट विल बी अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। टाइम फॉर अ फिल्टर चेंज, व्हाई नॉट। जब इधर हैं तो माइट एज़ वेल चेंज द फिल्टर। There's underneath here. Oh wow, this looks, ooh. Take a look at this. That's how much dirt it has. अब हम जो हैं एयर ब्लोअर लेंगे। ये ज़रा लुक देख रहे हो अभी, अभी इस साइड पे देखें। एंड नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक साफ कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक, और ये अभी गंदा है। Okay, this is good. Now the last inside की।